ऑल राइट, सो मेरे साथ हैं कल्पेन सर एंड टॉपिक सभी के दिमाग में एक ही है। निर्मला मैडम की स्पीच हो गई है, बजट आया है, क्या होगा कैसे होगा। बिफोर आई आस्क माय क्वेश्चन सर, आई वुड लव टू हियर व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट ब्रॉडली। अभी एज ऑफ नाउ मार्केट में जो न्यूज चल रही है। तो विष्णु, आपको अच्छा आंसर चाहिए या सच्चा आंसर चाहिए? सच्चा सर, ऑफ कोर्स। ओके, ग्रेट। तो सच्चा आंसर यह है कि देखो, गवर्नमेंट ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया। उनका बजट का जो स्पीच का जो टाइम था वो लेस देन 1 आवर था। एंड इट इज द शॉर्टेस्ट बजट स्टेटमेंट और स्पीच दैट केम आउट। एंड दैट इज अ सम एंड सब्सटेंस दैट when the government announces its own budget, it does not most of the times mean anything to the consumer or to the investor, because our investment programs are multi-decadal. Budgets are annual. Annual budgets ideally rarely have any impact or implication for us as investors. Very selectively, once in 10 years, when the budgets are game changing or defining moments. Either it happens in crisis or it happens in the best of times, is when you tend to there is a need to react. But आज के बजट में मेरा ये मानना है कि कंटिन्यूटी है, कुछ नया नहीं है। जो पर्सनल फाइनेंस का सबसे पहला लेसन है हम सबके लिए, जो हम फॉलो करते हैं कि अगर हमें अपना वेल्थ बढ़ाना है तो हमें खर्चे कम करने चाहिए या रीजनेबल रखने चाहिए, और सेविंग्स ज्यादा करनी चाहिए। बजट ने भी वही किया है आज। ओवरऑल देश का जो खर्चे का रेट है वो स्लो हुआ है। नॉर्मली इसको फिस्कल डेफिसिट बोला जाता है, कि जो हमारी इनकम और खर्चे की जो गैप है, वो गैप को गवर्नमेंट कोशिश कर रही है हर साल धीरे धीरे करके कम करे। कोविड के पहले इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए, बॉटम ऑफ द पिरामिड को सपोर्ट करने के लिए, गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग को बढ़ा दिया था, अपने खर्चे को बढ़ा दिया था। उस खर्चे के रन रेट को इस बजट में गवर्नमेंट ने थोड़ा और कंट्रोल किया है और डिसिप्लिन लेके आए हैं। तो जब देश अपने खर्चे के पैटर्न में डिसिप्लिन लाता है और सेविंग्स के पैटर्न में इंप्रूवमेंट लाता है, तो ये अच्छी बात है। इससे एक स्टेबिलिटी कंटिन्यू रहेगी। और अगर मार्केट में स्टेबिलिटी रहती है, अपने इंटरेस्ट रेट्स में स्टेबिलिटी रहती है, हमारे करेंसी में स्टेबिलिटी रहती है, तो it's a good reason to maintain continuity, and that is the only inference. So the budget was short and sweet. It just said that save more, spend less, stay invested for the long term. एब्सोल्युटली सर। सर, कमिंग टू थोड़ा सा और, जैसा कि आपने बोला कि सरकार ने स्पेंडिंग थोड़ी कंट्रोल करी है, थोड़ा अच्छा सा कंट्रोल लाने की कोशिश करी है। इसका इम्पैक्ट आई थिंक लॉन्ग टर्म में तो हम लोगों को प्ले आउट होगा ही। शॉर्ट टर्म में एक और चीज जो चल रही है कि सिंस इन्फ्लेशन वाज अ बिग कंसर्न आफ्टर दैट स्पेंडिंग, आरबीआई अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि इन्फ्लेशन में कंट्रोल लाने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता जा रहा था। अभी थोड़ा फिस्कल साइड से भी सपोर्ट मिलेगा, तो इट्स प्रोबेबल कि शायद इंटरेस्ट रेट्स थोड़े से सॉफ्टन हो। तो डू यू थिंक हाउ वुड दैट प्ले आउट फॉर आवर इन्वेस्टर्स एंड हाउ शुड दे So इनकॉर्पोरेट इन देयर फिलोसफी, इन्वेस्टमेंट फिलोसफी? सी, डीएसपी में ना हम हर महीने या 2 महीने में हमारे ओपिनियंस और व्यूज को पब्लिश करते हैं, और इंटरेस्ट रेट्स के व्यूज को हम हमारे वेबसाइट पे एक डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है कॉन्वर्स, डीएसपी कॉन्वर्स। उसमें हम हमारा व्यू पब्लिश करते हैं। तो हमने जस्ट 7-8 दिन पहले लास्ट कॉन्वर्स पब्लिश किया था, और हमने यही बताया था कि जनरली आवर गवर्नमेंट्स ओवर द लास्ट मेनी years have been disciplined. They do calibrate their spending depending on the need of the economy. And like I said, before COVID, the need was to spend more. We still spend very sensibly, unlike the rest of the world, जहाँ पे लोगों ने फ्री में स्टिमुलस दे दिया। इंडिया ने बहुत ही कैलिब्रेटेड तरीके से काम किया, जिसका आफ्टर इफेक्ट ये हुआ कि दुनिया भर में 10 से 12% का इन्फ्लेशन हो गया, जबकि इंडिया का इन्फ्लेशन रीजनेबली स्टेबल था। 5 से 7% के बीच में स्टेबल था। गवर्नमेंट की और आरबीआई की कोशिश है कि इसको 4% ±2% के बैंड में रखे। एंड एज लॉन्ग एज इन्फ्लेशन इज रीजनेबल, a steady inflation indicates growth. It means we get our salaries go up, cost of living doesn't go up too sharply, pricing power मिलती है कंपनीज को। तो इस बजट में दो चीज हुई है कि गवर्नमेंट का जो टोटल स्पेंडिंग है पूरे साल का, नॉर्मली 14 से 15 लाख करोड़ का होता है, वो थोड़ा कम हुआ है। तो जब टोटल बोरोइंग, तो जब गवर्नमेंट जो हर साल बोरो करती है, वो पैसा हम सब से, हमारे सेविंग से वो बोरोइंग फंड होता है। या तो वो म्यूचुअल फंड के जरिए होता है, या बैंक्स अपने
सिक्योर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के थ्रू फंड करती है, या इंश्योरेंस कंपनीज अपने पोर्टफोलियो के थ्रू बॉन्ड्स खरीदती है। और पिछले साल में इंडिया के जो बॉन्ड्स है वो जेपी मॉर्गन के बॉन्ड के इंडेक्स में भी आ गए हैं। तो अगले 2-3 सालों में ग्लोबली भी इंडिया के बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ेगी। नॉर्मली अगर डिमांड बढ़ने वाली है और सामने अगर सप्लाई भी बढ़ता है, विच मीन्स द गवर्नमेंट विल से दैट ओके डिमांड आने वाली है तो चलो हम थोड़ा और बोरो कर लेते हैं, देन उसका इंटरेस्ट रेट में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट ये हमारे हिसाब से एक अच्छा मौका है कि हमारी डिमांड फॉर इंडियन बॉन्ड्स इज राइजिंग and the supply of Indian bonds is remaining steady. And that means that the demand supply equation is favorable for owners of bonds. And it means that directionally interest rates should remain either stable or trend downwards. How do we take advantage of that? जैसे हमारा जीसेक फंड है, गिल्ड फंड, जहां हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स खरीदते हैं, या हमारा एक्टिव डेट फंड है जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक बॉन्ड फंड। अगेन इसमें हम डिसाइड करते हैं कि हमें लगता है अगर इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाने वाले हैं तो हम कम मेच्योरिटी के बॉन्ड्स रखते हैं, 1 साल 2 साल के मेच्योरिटी के बॉन्ड्स रखते हैं। और अगर हमें लगता है इंटरेस्ट रेट नीचे जाने वाले हैं तो हम 10, 15, 20 साल के बॉन्ड्स रखते हैं। आज की तारीख में हमारे पोर्टफोलियो का जो टोटल बॉन्ड का मेच्योरिटी है वो 15-16 साल का है, और ये पिछले हम 2 महीने से ये पोजीशन हमने लेके रखी है। तो हमारा ये मानना है कि इस बजट का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो है वो है बॉन्ड। द बॉन्ड ऑफ इंडिया हैज बिकम द बॉन्ड। अभी तक हम हर बजट में हमारा ध्यान होता है इक्विटी एसेट क्लास पे, और वैसे भी फिक्स्ड इनकम में क्या 7-8% रिटर्न मिलता है, और जब इक्विटी 30-40% देता है स्मॉल और मिड कैप के बबल में, तो हमें वो 7-8% की वैल्यू नहीं होती है। तो इस बजट का एक पॉइंट सिर्फ ये है कि अगर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग जब कम करती है तो थोड़ा केपेक्स कम होगा। गवर्नमेंट ये भी इंडिकेट कर रही है कि जो अपने एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट्स है वो थोड़े मॉडरेट होने की चांसेस है। टैक्स कलेक्शंस थोड़े मॉडरेट हो सकते हैं, ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ मॉडरेट होगा। So in a very crude way, one can assume that this budget is more positive for bonds than for equities. Absolutely. So you briefly touched already the equity and bond angle. So थोड़ा सा बॉन्ड तो हो ही गया, हमारा जेम्स बॉन्ड अभी बॉन्ड ही बनने वाले हैं। But talking about equities, which sectors do you think are going to be in focus now? बजट की वजह से कोई भी सेक्टर का नुकसान या फायदा नहीं हुआ है, बिकॉज बजट ने कंटिन्यूटी को मेंटेन किया है। कोई नए ऐसे अनाउंसमेंट नहीं हुए कि जिसमें उन्होंने बोला कि हम इस सेक्टर पे स्पेंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, या इस सेक्टर पे हम टैक्स बढ़ा देंगे जिससे ये सेक्टर शायद इतना अच्छा ना करे। तो बिकॉज ऑफ द बजट आई हैव नो ओपिनियन टू से कि विच सेक्टर लुक्स गुड और बैड, but because the budget is non-disruptive, the budget is stable. What looked good yesterday as a sector to us will remain good to invest even today and tomorrow. In all our portfolios of DSP, the largest investments are in the BFSI sector. So we believe that the best run banks of India, whether it's HDFC Bank, ICICI Bank, Axis Bank, Kotak Bank, SBI, these banks, barring the PSU banks, the private sector banks for the last year or 3 or 5 have seen their profits rise. But the stock prices have not risen equally compared to a lot of other sectors. So we believe कि banking में there is a pocket of opportunity जहाँ पे prices reasonable है, stocks के जो prices है they are reasonable, and the growth rate is steady and will continue to play out over the next 3 to 5 years. Overall financial services है, companies like yours who are into wealth management and broking, because as Indians who are always known to be good savers, but the amount of savings in their hands is rising. The saving pool is rising because 5 years back, a lot of money used to get deployed in either real estate or cash-led asset classes. Now everything is becoming formal and coming into the hands of good wealth management firms, broking firms, insurance companies. So this is a good bucket where 10-15 साल के लिए there is a reasonable runway of size and opportunity, and for the last 2-3 years the stock prices have trended downwards or remained flat. So we like that bucket. So most of our funds have between 30 to 35% of exposure there. In fact, just 2 months back we actually launched a BFSI fund. We normally launch a sector fund or a thematic fund which are generally perceived to be risky because they are volatile.
Investors like to invest in them when the last 1 year returns are very high. We like to launch such funds when the last 1 year return is very low, because you're buying in at low prices. So we actually launched our banking and financial services fund 2 months back, so that investors could take advantage of this consolidation which is playing out. So that is one sector we like. The other sector which is very large in our portfolio is the pharma and the healthcare sector. ये सेक्टर 2015 में पीक हुआ था, उसके बाद 6-7 साल का इसमें कंसोलिडेशन हुआ है, और पिछले एक आध साल से द ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैव स्टार्टेड मूविंग अप, मार्जिन्स हैव स्टार्टेड इंप्रूविंग. इस सेक्टर का, सो अनलाइक बैंक्स व्हिच आर ओन्ड बाय एवरीवन, एंड दैट्स वन ऑफ द रीजन व्हाई इट इज नॉट रियली मूविंग टू फास्ट, हेल्थ केयर एज अ सेक्टर इज हाईली अंडर ओन्ड. पूरे के पूरे मार्केट में 3 या 4% का वेट है हेल्थ केयर सेक्टर का. 2015 की तेजी में पूरे सेक्टर का वेट 10 से 12% हुआ करता था. So that has significantly, come down. So that sector looks very attractive to us. Automobiles, again, the industry went through a long phase of slowdown. Two-wheelers में 10 साल का flat period था, four-wheelers में 5 से 6 साल का flat period था. I think that cycle is just turning again, though a lot of these stocks have run up in the last 1 year. But these are the three broad big sectors which are a part of our portfolio. राइट. सर, एक और चीज पे आपका थॉट जानना चाहूंगा. आई थिंक काफी सारे ग्रीन इनिशिएटिव्स की भी बात करी गई थी बजट में. उससे पहले भी सोलर रूफटॉप आया था, अभी फ्रॉम गैसिफिकेशन ऑफ कोल टू बहुत सारी चीजें चल रही हैं. तो एज एन इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर्स, हाउ कैन दे मैक्सिमाइज, मतलब इस पे कैसे कर सकते हैं, पैसा कैसे बन सकता है इस ग्रीन थीम पे? देखिए, ये जो सोलर और रिन्यूएबल्स का जो स्पेस है, दिस इज अ न्यू स्पेस फॉर इंडिया, एंड दीज आर सम वेरी वेरी लॉन्ग टर्म एस्पिरेशंस एंड प्लान्स. They may not be immediately investable because there are very 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 limited companies where you can in a pure play invest in some of these companies, because ये काफी नया sector है in a way. Lot of new policies are being set up. Profitability की stability इसमें समझना बहुत जरूरी है. So 10-15 years back, when I was actually a very bad investor, I used to just look at headlines. Headlines would say that big boost to renewables, big boost to power. You would go and buy stocks, some power stocks, but that's a fundamentally very wrong way of investing. The question to ask is कि ये जो भी boost है, ये होते होते तो 1 साल में होगा, 2 साल में होगा, 10 साल में होगा. Things take time. Secondly, when the boost happens, are there enough solid companies जिनकी profitability में improvement होगी? Because the boost doesn't necessarily mean profitability rises. Third, the companies which are they run by great managements who are friendly to the shareholders, where governance practices are very good, and their return on equities are 15, 20, 25%. Only if all these conditions are met do you now start evaluating these type of opportunities. I think these are very long term themes, and there are many companies who claim that we want to be in this bandwagon. Some part of our incremental capex will happen in that bucket, but अभी केपेक्स करने का टाइम है, तो जो कैपिटल लगाने वाला है, लेट हिम पुट द कैपिटल. एज एन इन्वेस्टर यू हैव टू वेट फॉर प्रॉफिटेबिलिटी एंड नंबर्स टू फर्स्ट कम आउट, and then you should take that call. Let me give you another example. Look at telecom. Telecom sector में 15-16 प्लेयर थे 15 साल पहले इंडिया में, एंड बहुत बड़ा ग्रोथ हुआ, बहुत बड़े रोल आउट्स हुए, नेटवर्क अपग्रेडेशन हुआ, कनेक्शन पूरे देश में हुआ. 80 से 90% लोगों के पास आज टेलीकॉम कनेक्शंस है. स्मार्टफोन में रेवोल्यूशन हुआ, डेटा में रेवोल्यूशन हुआ, penetration became almost 100%. We are like a role model country in terms of growth of that industry, explosive growth. But only 2 or 3 companies remain today. Most companies either became loss making or moved out. So I only urge the viewers not to just loosely connect headlines or lines without studying deeply whether the underlying companies are investment worthy, whether they have great management, whether they respect capital, whether they have steady profitability. Ultimately, profit pool से ही shareholder का पैसा बनता है. So when we are going to invest in a fund, or you are going to invest in our funds or buy stocks, you're becoming a shareholder. You have to be shareholder of profit pools, and those profit pools should be rising profit pools. It is a bit early to take that call. You will see many stocks are flying right now. कोई एक सेक्टर की स्टोरी आ जाती है, स्टॉक 10%, 20%, 30% ऊपर होता है. That is a very risky way to invest. I have made these mistakes, so I just hope that you can learn from mine and not actually lose capital and then learn. Absolutely. Thank you so much for that, sir.
Another theme that is going around in the markets is around infrastructure कि वो continuously I think focus रहा है successive budgets में, including this one I think combinedly more than 10% हम लोग का infrastructure में जा रहा है. Do you think there is an opportunity there? See, 10% जो केपेक्स आप बोल रहे हो, राइट? स्पेंड टुवर्ड्स केपेक्स, इज Yeah, yeah, वाज दैट yeah. योर क्वेश्चन? Yes. So actually, see, these are very usual numbers. अपने देश में 5-6% तो इन्फ्लेशन ही है, और उसके ऊपर का ये 4-5% का स्पेंड है. So these are not very large spends. So actually, the government has been investing a lot more in capex in the last few years. और उसके चलते lot of these stocks have run up also. So the best performing sector in the country in the last 2-3 years has been industrials, engineering, capital goods, power stocks. These are the sectors which have actually run up sharply. Now many good companies have actually done a great job in terms of increasing their revenues and profitability. But at the same time, there are many weak companies where profits have not risen, but the stocks are up 200, 300, 400% just because there is a story that capex ho raha hai. So you have to be very discerning and not just blindly buy that story. And in fact, in this budget, the announcements towards capex were far more muted. Maybe because this was an interim budget. Maybe July mein government is confident it will come back, and then maybe have a more detailed rollout or a more intense budget. So you should wait till then, not just get carried away with this 11% number, because this number is not a very big number. Like I said, इसमें आपको अगर कोई इक्विपमेंट खरीदना है, फैक्ट्री लगाने के लिए मशीनरी खरीदनी है, तो 5-6% तो वो लास्ट ईयर के भाव के ऊपर ज्यादा होने वाला है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. सो अपने आप उतना तो केपेक्स बाय डिफॉल्ट 6% होना ही है. Absolutely. Considering the positive time, एक final question, sir. If you can give us top three key takeaways या top three advice, not like stock advice, but in general to our investors कि क्या करना चाहिए, that would be great. Okay, so I'm not preaching. I used to behave badly in the past, but over time I've realized that the best advice to follow is to become is not to be a victim of events. So budgets है, credit policy है, फेडरल रिजर्व का मीट होता है, कल रात को यूएस फेड मिला था. So lot of these are events which can be where many people will come and tell you कि ये इवेंट हुआ अब ये करो, ये इवेंट हुआ तो अब ये करो. मेरा उल्टा मानना है, मेरा ये मानना है कि अगर आपको अच्छा इन्वेस्टर बनना है, पैसा कैसे बनता है? पैसे बनाने की फॉर्मूला में सबसे पावरफुल वेरिएबल टाइम का है. लोग वॉरेन बफेट की बहुत सारी बातें करते हैं, उनकी किताबें अपने शेल्फ के पीछे होती है, उनके कोट्स व्हाट्सएप पे लोग एक्सचेंज करते हैं, लेकिन कोई उसकी जो लर्निंग्स है वो अप्लाई नहीं करता है. लोगों को वॉरेन बफेट का 19% कंपाउंडिंग रिटर्न दिखता है. लोग बोलते हैं कि इसका पोर्टफोलियो 70 साल 70 ईयर्स से रफली 18% 19% से कंपाउंड हुआ है. So the hero is not 18 or 19%. The hero is, he stayed invested for 70 years. Now that is the key learning for us. So now if we have to, paisa banta hai by staying invested. Now if you have to stay invested, you have to switch off from most things. Typically, most events, most news flows, most interactions, including mine, might unnecessarily trigger some stimulus or activity which might be harmful to you. So take everything that I say with a pinch of salt. The only message I have is do nothing at large. Good investing is like taking a long flight from Mumbai to New York. For the first 5 minutes, there will be some turbulence where you need to act, you need to fasten your seat belts and stay composed. And only when you land, again, you have to wear your seat belt. In between, for the balance 95% of time, you're not supposed to do anything. You're supposed to sleep, relax, read, watch a movie, talk to your co-colleagues. But do nothing is the best way journeys are completed. So I think in investing, doing nothing unless there is a need to do something is the first message. The second message is, rebalance your portfolio to what your ideal asset allocation should be. So if your asset allocation should be 70 equity and 30 bonds, and that 70 has become 80 to 83 because last 1 year stock prices have gone up, use this to rebalance it back. If your asset allocation is 30 equity and 70 bonds, again, use rebalancing to remain at 30. So each person's asset allocation is unique to each person. Stick to that asset allocation. That's my second principle. And the third principle is don't chase past returns. If I were to tell you that there are two funds of DSP, one fund has given only 8% return in the last 1 year, and the other fund has given 33% return in the last 1 year.
which fund will you invest in? 99% people will first say 30% वाला fund, without even asking कि ये fund है क्या और ये इसने ज्यादा रिटर्न क्यों दिया है, क्या ये दोनों सेम एसेट क्लास है. So like this is I'm just showing you, this is the blank check that my mother has given me. She has got some pension money in her bank account. I have to make that investment, and I'll do this tomorrow because आज 3 बज गए हैं. But my investment will be actually in an equity fund which has underperformed in the last 1 year, because I know that theme is available at lower prices. तो मुझे तो जितना कम भाव में नया माल मिलता है वो अच्छा है. तो तीसरा मेरा मैसेज ये है, डोंट चेस पास्ट परफॉर्मेंस, बाय गुड फंड्स, not looking at their 1 year, 3 year returns, but by keeping in mind that these are disciplined funds, these are good fund managers who over a long period of time have done very well. So do nothing if there is no need to do anything. Just stick to the right asset allocation number that is meant to be relevant for you, and don't chase past returns. I would have not said don't chase past returns if you are in a bear market or in a market like 2008 to 13 where for 5 year returns were zero. तो past के returns ही नहीं थे chase करने के लिए, और इसीलिए कोई चेज ही नहीं कर रहा था. बट आज जब कोविड के लो के बाद मार्केट 35% ऊपर है, स्मॉल और मिड कैप पर एनम 40 से 50% ऊपर है, तो बहुत ही टेम्पटिंग होता है पैसा वहां लगाने के लिए. नाउ लेट मी टेल यू दैट टुडे इफ अ फंड इज शोइंग 4 year रिटर्न्स ऑफ अराउंड 35-40%, it is only for the investor who invested 4 years back, not for you, not for any of you who are going to put the money today. Your returns ka meter is going to start today. And the guy who earned that 40%, why did he earn 40? Not because we did well, but because he had the courage to invest on a day when that day's prior 3 year returns were zero or negative. So 99% people do not invest when prior returns are bad. They invest when past returns are good. Actually, the reverse is more valuable. So these are few messages that I would want to leave with you. Absolutely, sir. This was I especially love the flight analogy. Ki 95% you just sit tight. This was amazing, sir. Thank you so much for your time. And I request you, please allow us to host you again. There's so much more we can learn from you, I'm sure. Thank you. All the best. See you. Thank you, sir. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon to never miss an update from ICICI Direct.